Hello students, today I am going to solve ISI MSQE 2020 subjective question section. This is actually came in the group B. So let's solve this part. We have a pretty long question. So Mr. A's income consists of 1 lakh rupees per year from the pension plus the earnings from whatever she sells from 2000 kilogram of rice she harvests in her farm. So she spends his income into rice and all other expenses. So all other expenses means Y are measured in rupees so that the price of Y is 1, a common price. Last year rice was sold for rupees 20 per kg and Mrs. A's rice consumption was 2000 kgs. So just amount that produced by the farm. So this year the price has increased to 30. Mr. A's standard convex preferences over the rice and all other expenses. Answer the following two questions referring to the utility function and or the indifference curve. So what will happen if the rice consumption this year बढ़ता है कमता है या फिर remain close and give a clear explanation to your answer. So income कितना है 1 lakh plus 20 kg. So 2 to the 4 4,000 40,000. So 1 lakh 40,000. So budget was Y plus 2x less than equal to 1 lakh 40,000. अब मान लेते इनकम का ये 2000 यूनिट्स ऑफ x एंड y स्टार इक्वल टू 1 lakh units of y. सो दिस ईयर 1 था, ईयर 2 में या फिर दिस ईयर में इनकम हुआ है 1 लाख प्लस 2000 इंटू 30. सो 1 लाख 1.6 लाख. सो बजट हो गया 1/3x 160,000. ओके अब अगर ऐसा सोचे सो इज स्पेंड ऑन x डैश यूनिट्स ऑन x एंड y डैश ऑन y. तो क्या होगा नया वैल्यू इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर पिछली बार की तरह बना दे. सो नाउ इफ x डैश x स्टार इक्वल टू अगर 2000 से बड़ा हुआ सो व्हाट वी कैन गेट. ओके सो विद रिस्पेक्ट टू एनी बंडल अगर हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे, अगर x डैश y डैश को यहाँ से लिया सो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे सो ये अगर चूज़ करता है x स्टार y स्टार को अगर चूज़ करते हैं ओवर ऑल द बंडल्स इन द लास्ट ईयर सो हम लोग देख सकते हैं x डैश दिस. सो जो मिस ए है इनका राइस कंजम्पशन x डैश दिस ईयर मे बी आइदर रिमेन द सेम या फिर बढ़ भी कम हो सकता है. सो राइस कंजम्पशन may remain same और fall बट बढ़ेगा नहीं. सेकेंड पार्ट में A choose last year x star y star so is also able to do the consumption this year. So A can only be better off. So A is better off. लास्ट ईयर से तो ज़्यादा खरीदा है ना. So obviously this is a better off situation. Okay,
So will she be better off or worse off compared to the last year? So this we have answered. Okay, already. Second, third part. Okay, now we have the second part, that there are two goods X and Y, and Mrs. B's standard convex references we have, and here also another important stuff is given. Now he has endowments of EX units of X and EY is given greater than 0. And he has not left any other source of income having no, and the price of good X is 1 and price of good, this is PX. So now suppose that good X, for good X the prices have become PL less than PX. An individual or seller where PH is greater than PX and an individual offer is a buyer. So now the price of good Y remains 1 and no matter whether the individual wants to buy it as a buyer or a seller, so there is no price discrimination. So what is the equation of the budget constraint and the draw the labeling of the important structures. Okay. So in this case the budget is initially PXX plus Y less than equal to PX, EX and EY. So he chooses the bundle X star Y star equal to EX EY. So under the new prices, the budget set consists of bundles XY such that it satisfies PLX and Y less than equal to PL of EX plus EY if X less than EX, and next PH of X plus Y less than equal to PH EX plus EY. And X less than EX, and obviously EX less than EY if X equal to EX. So this is the cases in the first part. Second part, will Mr. B will buy or sell X, how much, and give a clear explanation to your answer without referring to any utility function or indifference curve. So एक alternative लेना पड़ेगा. That's the consider any allocation जहाँ पर ये इसके साथ इक्वेट नहीं है. सो वो नया बजट कॉन्स्टेंट को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट कंडीशन X लेस देन EX. सो दिस सेटिस्फाइड PLX plus Y less than equal to PL EX plus EY. So now PX PL and EX minus X ये greater than equal to 0 होगा. So if we add this thing to the RHS and adding to RHS, and simplify करेंगे फिर इसके बाद. So PL X Y less than equal to PL EX EY PX EX PXX PL EX and XPL. सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा? PX इंटू एक्स प्लस वाई PX इंटू EX प्लस EY. तो ये जो नया है बंडल है, सो XY वो न्यू बजट में भी रहेगा. सो ओल्ड बंडल ऑल्सो इन न्यू, लेकिन तभी रहेगा जब X लेस देन EX है. ओके, लेकिन इफ़ X ग्रेटर देन अगर EX हो जाए तो क्या होगा? तो हमारा जो पुराना इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड रहेगा. और PH इंटू PX ये है. सो वी कैन कंक्लूड दैट द बजट जो है वो है इनिशियल बजट से ही क्रिएटेड रहेगा. और मिस्टर बी जो यहाँ पर है ये चूज़ करेंगे EX EY. B's combination budget is this, so you will choose EX and EY.
सो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेंगे ई एक्स सी वाई के साथ और एक्स बी नो सेलिंग ऑफ एनीथिंग और वाई.